Even Akbar, kindly.
Hello, the workshop live will start shortly.
Hello, hello. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all present out here. Today is the last day of a 5-day national workshop on multidisciplinary research methodology. Last 4 days, we had a wonderful experience and we gained knowledge. We are expecting the last day will be enriching too. So on the last day, the session will begin with Professor Dr. K.M. Baharul Islam, Sir, Director, IMT, Hyderabad. A little introduction about Sir. Professor K.M. Baharul Islam, Sir, is presently the Director, Institute of Management Technology, Hyderabad, India. He was a professor and the chairperson of Center of Excellence in Public Policy and Government at Indian Institute of Management, Kashipur, from July 2012 to January 2025. He served as a dean academics during 2019 to 21 at the same institute. He was elected as a fellow of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland on 18 March 2020. Since October 2021, he was a visiting professor at the London School of Economics. Professor Islam led a major regional capacity building program called Environmental Assessment Capacity Building in South Asia, funded by World Bank during 2014 to 16. Under the project, he planned and successfully piloted a green MBA specialization within the postgraduate program in management in Indian's Institute of Management, Kashipur. We are honored to have him with us on the last day as the first speaker. So we would like to felicitate Sir and to begin with our program. So Sir, I request you to come. 2 of our students will felicitate Sir. Please put your hands together to welcome Sir. Yes, a big round of applause. So today, Sir will speak on use of AI tools in research. Sir, the dais is yours. This is Excuse me, sir. Not empty. Oh, yes. Great. That gives me freedom. Okay, check. That's there. Okay. Is it auto following me? Okay. Okay. I'll keep the screen so that they can see. They can see. Okay, fine. So first of all, thank you. I thank the Honorable Vice Chancellor, Professor Islam, in absentia, Professor Lashkar, Professor Zaman, my old companion from Aligarh campus, and all the respected faculty members, participants, ladies and gentlemen. I had planned it for 2 hours, but now it will be less than that. We'll probably spend half an hour. In 2 parts. First of all, when you see interesting title like this, artificial intelligence, machine learning, data mining, deep research, it gives one, it makes us very excited about something new. But as we are human beings, and many of you who are from education department, educational psychology, it also has a psychological impact. And one of the greatest impact on anything new which is coming in our work life or in our daily life is what is called a mental block
or mental resistance or mental inertia. So I'll spend some time on mental inertia, technology adoption, because this is something which we have to all repair, whether we are in our 50s or in our 30s. Because by 30, and when we join our profession or master's program, our basic learning and working habit is already somehow stabilized. And therefore, any change in that working habit, learning habit, or reading habit is the biggest challenge we face post 30. More or less. I'm not being very accurate with it. You can get your bodhyabhas আপনার 20 বছরই fossilized মানে stabilized হয়ে যেতে পারে. So we have to spend a lot when we become adult learner, like in today's session. We have to spend a lot of time in rediscovering ourselves and how much change we can resist. Because at this time, change looks very lovely and interesting, but it is very difficult to incorporate those changes and to bring a more importantly, what professional benefit I can get out of it. Simple example, if you attend anything, or if I give two examples, one from Baba Ramdev, if you attend his program, within half an hour you pay 5,000 rupees and do a session, and you feel like, oh, this is very good. Tomorrow morning 5 I'll do Surya Namaskar, Pranayam and Yoga, and I'll be healthy. Similarly, আমাদের গ্রামে যখন ওয়াজ মাহফিল হয়, কান্নাকাটি করে কাল থেকে আর নামাজ কাজা হবে না, আল্লাহ যা হয়েছে হয়েছে, কিন্তু রাতভর ওয়াজ শুনে সকালবেলা ফজরের নামাজের সময় আর ঘুম ভাঙে না। So both way, you see, this is an habitual. We feel very excited. From tomorrow, I'll do Surya Namaskar or yoga, and I'll improve my life. Very important. But at the same time, also we feel very elated that okay, যা হওয়ার হয়েছে, আর একদম এত লক্ষ বছর একক নামাজ কাজা করলে এত লক্ষ বছর হ্যাঁ জাহান্নামে থাকতে হবে, সব শুনে টুনে একদম রাত্রিরে মনটা একদম বিগলিত হয়ে গেল, সকালবেলা উঠে ফজরের নামাজের সময় আবার শয়তানের আশ্বাস, ঘুমই ভাঙলো না। It is because my body is not listening to what the Maulana is saying or what Baba Ramdev or any yoga guru or any dharma guru is saying. Though spiritually I feel very active, but physically, psychologically, I cannot adopt that change. Whatever may be the incentive, it becomes more critical in terms of addiction, whether tobacco addiction or drug or alcohol. It becomes so stabilized that even knowing everything, you continue this. So now let us talk about this part a bit, and then we'll go to what AI is trying to do. When we are saying AI, if you do the first part and you make the changes in your life from tomorrow, and I'll give you a very practical example, practical tip, if you can adopt it from tomorrow for change, then second part will automatically flow. You'll become much more expert in AI by next year this time than what I am or what another person is. Nobody can beat you. But the first part should start tomorrow. So what is that first part? Very quickly, in the first part we are talking about this inertia, Newton's inertia law, you know, the first law. So objects in motion stay in motion unless there is another force. The same thing is called mental inertia. Oh, আমি তো খুব শুনছি রে ভাই, এগুলো তো আমার কানে আসছে কেবল। হ্যালো, ওকে, খুব ক্লোজ জায়গায় মাইক্রোফোন থাকলে খুব বেশি বাড়াতেও পারবে না। What I will propose is that those people who are in dark, you can come forward. There are a lot of vacant seats in the front area.
ফিজিক্স, আবার ফিজিক্সের ব্যাপার, খুব ভলিউম বাড়ানো যাবে না, ক্লোজ এরিয়াতে মাইক্রোফোনটা বেশি পাওয়ারফুল ও রিসাইকেল করতে ইকো হয়ে যাবে। মাইক ঠিক আছে? Okay, very quickly, we have a Jumma today, so I want to come to some conclusion. Like, I'm a very bad teacher in terms of timing. So I always worry that I'll not finish what I start. So mental inertia is something like this. Until and unless you create another force to dislodge it, it does not want to move. Now, there are a lot of other things, psychological resistance, and when we faced with a change, for example, for any skill or adopting any kind of development, either it is professional or personal, you can change any kind of developmental change. There is a reluctance, there is procrastination, korte hobe, je e bochor khub eta kortei hobe, ekta paper publish kortei hobe, প্রমোশনটা আটকে আছে, কিন্তু ওই আর হয়েই ওঠে না। ডাটা হয়ে আছে, ডাটা সব ব্রেনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু ওটা আর ইন্ট্রোডাকশন, কনক্লুশন, মেথোডোলজি আর হচ্ছে না। Stems from the cognitive biases. Where from it comes? It is nothing that you are specially suffering from. All of us suffer from that, on some way to other. কেউ ভালো পেপার পাবলিশ করছে, কিন্তু গিন্নি চিৎকার করে যাচ্ছে, ঘরটা একটু ঠিক করো, এবার ঘরটা রং করো পুজোর আগে, কিন্তু ওটার হচ্ছে না। তো somewhere it will happen. It is not that somebody is publishing, he is not having inertia, he is inertia in some other thing. Fine. So to make it a light of the, when at around 50 Abhijit Banerjee get his Nobel Prize, এই সময় হয় যে বাবা মারা চট করে যখন সচিন তেন্ডুলকারের বয়সের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে থাকে, তখন তো বিপজ্জনক অবস্থা। দেখ 17 বছর বয়সে কি করে ফেললো, গাধা তুই কি করছিস। তো 50-এর উপর মনে হলো না যে এরকম কোনো তুলনামূলক পরিস্থিতি, আর বাবাগত হয়েছেন, সেখানে গালাগাল দেওয়ারও কেউ নেই, কিন্তু গিন্নি শুরু হয়ে গেল। এই শুনেছো অভিজিৎ বাবুর বয়স কত, নোবেল প্রাইজ। দুদিন তো আর ঘুম হয় না। এই অভিজিৎ বাবুকে এই 50-এ নোবেল প্রাইজ পেতে হয়েছিল। আমাদের মতো মাস্টার মশাইদের জীবন এখন তো দিকে বীরবলের ওই ছোট টান হয়ে গেলাম। সিভিটিভি দেখে দেখলাম না, উনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন ওনার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টকে, সেই ভদ্র মহিলাই ওনার সঙ্গে নোবেল প্রাইজ ইকোনমিক্সে পেয়েছেন, আস্টার ডে ফেলো। উনার নাম খুব আসে, কিন্তু ওনারা তো যৌথ প্রাইজ পেয়েছেন না। যৌথ যিনি পেয়েছেন, উনি গিন্নি আমেরিকাতে ছিল, উনি দিল্লিতে এসেছিলেন, সঙ্গে রিসার্চ স্কলার এসেছিল, নোবেল প্রাইজ হয়ে গেছে। এই গল্পটা মিসেসকে শোনালাম, তারপর থেকে খুবই শান্তি বিরাজমান। 50-এ নোবেল প্রাইজ পেতে হলে যে কসরত করতে হয় ম্যাডাম, সেটা কি করবো? অমর্ত্য সেনের কথা তুললামই না। So at one point of time, you have to listen to a lot of things, that you have to do these things. Why he was a change? Now after he got the Nobel Prize, আমার ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে যারা কলিগ ছিলেন সবাইকে ডেকে ডেকে যে এই ভদ্রলোক কি কাজ করেছে রে, নোবেল প্রাইজটা কেলুক বিষয়, অনেক কথা ইসলাম সাহেব আপনাকে করিডোরে বলা যাবে না, অনেক ব্যাপার আছে। যাই হোক, দেখলাম অর্থনীতি বিভাগের লোকগুলো ঠিক সেদের সাথে জবাব দিচ্ছে না কিছু। It is the questioning the most ordinary which is reach you to the top. What is that ordinary question? অভিজিৎ বাবুর আগে বা পরে যাদবপুরে পড়িয়েছেন, কত মাস্টার মশাই এসেছেন, আর কতজন লোককে এই টানা রিক্সাটাকে গরমের দুপুরে বা এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। But nobody asks that question. এরা যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তো এর ইকোনমিতে, ভারতবর্ষের ইকোনমিতে বা কোনো কান্ট্রির ইকোনমিতে কি ইম্প্যাক্ট পড়ে when the labor force is not moving, inertia. So যখন একটা অটো রিক্সা বা একটা টানা রিক্সা বা কোনো একজন কাজের লোক সে কাজটা করছে না, ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, then he is not contributing to the economy.
এই সময়টা যদি সেই ট্যাক্সিটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত, তাহলে ইকোনমিতে 200 টাকা অ্যাড হতো, সেই টাকাটা রিসাইকেল করতে থাকতো। এন্ড দ্যাট ইজ এ বিগ থিং। একটু সাধারণ জিনিসকে প্রশ্ন করা, কোয়েশ্চেনিং দ্য ইনার্শিয়া। There is another Nobel Prize winner in political economy, Richard Thaler. He got a Nobel Prize, and his very famous book, you can download and read it, Nudge, N-U-D-G-E, Nudge, by Richard Thaler. Why he got Nobel Prize? He went to the university canteen. আমরা কত ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে খেয়েছি, কেউ এটা চিন্তা করেছে? He went to university canteen and he started looking at the shelf. And he saw that একদিন সিঙ্গারাটা নিচের তাড়িয়ে থাকে, তাকে মানে শেলফে থাকে, একদিন রসগোল্লাটা উপরে, একদিন আবার সিঙ্গারাটা নিচে, আবার লালমোহনটা পাশে। So he started looking at why this guy is not following a pattern, why he is moving up and down. And that he started asking questions. That is the biggest economic theory. That if you put a particular item at a, and this is how management and business and economics was influenced by very simple nudge theory, that if you put that at an eye level, she shingara khete esechilo kintu dekhbe rasgulla, he will go to rasgulla very soon psychologically. So this shop seller, the canteen person, was actually pushing the item which is selling less. গতকাল রসগোল্লা বেশি থেকে গেছিল, সিঙ্গাড়া খেয়েছে সবাই, আজ শেষ রসগোল্লাকে উপরে তুলে দেবে। তো ক্যান্টিনে যারাই আসছে এক কাপ চা নেবে, সঙ্গে কি নেবে? রসগোল্লা। এত সাধারণ জিনিস কত প্রফেসর দেখেছে প্রশ্ন করেনি। রিচার্ড থেলার asked this question and he got a Nobel Prize. So most of us are inertia. আরে চা খেতে এসেছি, যে এক কাপ ওই তাড়িয়ার দিকে থাকে থাকার কি ব্যাপার, পাগল নাকি? এবং ভারতের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবে আগামী 2 ঘন্টা। হ্যাঁ, কতবার প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী চেঞ্জ করব, এর মধ্যে তাড়িয়ার দিকে তাকিয়ে থাকবে। And if you remember the Beautiful Mind, another Nobel Prize, Beautiful Mind, who is the Nobel Prize winner? John Nash Jr. And you remember where he found his theory of probability, the Nash equilibrium? He went to a disco with his friends, so there are less number of girls and more number of boys, his friends, and everyone was trying to become friendly with the girls, and he was sitting in the corner and watching what is the probability of these 3 guys or 7 guys attacking 3 girls. 4 জনের তো হবে না মনস্কামনা পূরণ, 7 জন ছেলে 3 জন মেয়ে একসঙ্গে গ্রুপে এসেছে। Now, how many times in our life we have seen the same scene, but we have never asked the question. He asked that question, and that reached to the equilibrium theory, which basically he is a professor of mathematics, but he got a Nobel Prize in economics because this has changed the way people buy shares, market equilibrium. And it impacted economy so much that he got the Nobel Prize in economics. And only 10 years his brain worked properly because, you know, he suffered from schizophrenia. In the film itself, you see his schizophrenia is coming, so much so that he could not go physically to collect the Nobel Prize. So his active brain was only 10 years. And he asked that question for 2 years, and there are many other nice stories which, if I tell you, you will become frustrated. For 2 years, he did not submit any paper, any progress report. So Dean was calling him that you are getting scholarship, no progress, what happened? He said, নতুন কিছু খুঁজে পাইনি, পেলে লিখবো এবং জমা দেব, আপাতত ডোন্ট ডিস্টার্ব। আমাদের এখানে হলে স্কলারশিপ বন্ধ টন্ধ হয়ে জেআরএফ টেআরএফ সব বুল্লায় চলে যাবে, কাজ হোক না হোক কিছু একটা জোগা খিচুড়ি লিখে জমা করতেই। কিন্তু উনি 2 বছর কিছু জমাই করেন। And when he submitted his essay and he got his, you can download it from Google, John Nash Jr. thesis. How many pages? 25 pages and only 2 reference. আমাদের এখানে 2 কিলো মতো রেফারেন্স জুড়ে দেয়, 150 পাতা রেফারেন্স দিলে তখন থিসিসটা ভারী একটু ভদ্রস্ত হয় আর কি, পাতে দেওয়ার মতো। Only 2 reference আর 25 পাতা, PhD awarded and Nobel Prize on the same 25 pages. Why? Because he asked
move that mental inertia. Change, asking the question most of the time. And that is where our mental, some explanation, now this I am cutting off, I am not giving you Carl Lewis theory, or there are many explanations given by psychologists from grief theory, the how people encounter grief, the same process is also there, So when you see a technology comes or a new thing comes that you have to do this, now we used to have something called Khaina Mathai, the UGC care list, now you have scoopers. So new list will come. We follow ABDC, Australian Business Deans Council list for our shortlisting of faculty members in business school. So this is the international, benchmark, ABS. So all these new kind of things will come. What happens immediately? Shock, denial. We want to resist those change. And obviously we get angry that this is happening, what more I can do, I have to do a class, I have to do research, and I have to do this and that. This is a kind of, my present routine get disturbed by new things. Then we try to bargain, we try to make a compromise. রিসার্চ স্কলারদের পরিশ্রম করিয়ে পেপারে সুপারভাইজারের নামটা লিখে কোনো মতে চাকরিটা বেঁচে থাকুক। হ্যাঁ, আমার প্রফেসর ইকরাম হোসেন আলীগড়, আমরা যখন প্রথম লেকচারার হিসাবে আজ থেকে প্রায় 32 বছর আগে জয়েন করি, so after now it is my 33rd years in this profession, নতুন নতুন লেকচারার হয়েই আমাদের একটা প্রোগ্রাম করতে হতো, ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম for 15 days or 2 weeks. So we did it, and I got a professor of my university who was my hostel warden also sometime, Professor Ikram Hussain, a professor of electrical engineering. And in his life he has written, just like all other people, he has written only a simple formula by which you see for Ikram's formula every day. If you study electrical engineering, you will learn Ikram's formula. It is one of the basic formulas by which they control this. You have seen in toll gate, you pay money and the toll gate, electronic gate goes up and down. So this is governed by Ikram's formula. So in his life he has written one paper, one PhD, one study, and that is a part of electrical engineering syllabus from India to America, everywhere, Ikram's formula. So he came to give us a lecture just like this, 2 weeks lecture. Everybody is saying publish, publish. If you do not publish research paper, you will not get promotion, this, that. But this guy comes in and say a very different thing. He says, in your life, you cannot have more than one original idea. One life is not enough even to study one original idea. You are joining as a young lecturer, in next 20, 30 years, try to find out one new thing in your life. That in 20 years you can say that this is one thing I have learned. And then he finally said that if you get one original idea, you can get a Nobel Prize, because this will change the world. और हमारे जैसे प्रोफेसर के सीवी में देखिएगा 150 पेपर का लिस्ट लगा हुआ, मतलब 150 ओरिजिनल आइडिया आ गया इस बंदे का. So he used to say, the guy who has a CV with more than 5 papers, this is useless. 5 original idea cannot come. Now the thing is that this is where we compromise. But instead of searching for original idea, ভাই কিছু করে একটা পাবলিশ করে চাকরিটা তো আগে বাঁচুক, করে না হয় নোবেল প্রাইজ পাওয়া যাবে. So we started compromising. কোন পাবে, কোনখানে গেলে পাবে, এমন ইন্টারভিউ নিয়েছে, সিভিতে দেখি শারদীয়া দুর্গোৎসবের মুখপত্র, ওখানেও পেপার লিখেছে, সেটাও লিখেছে. মানে সিলেকশন কমিটিতে গেলে মাথা খারাপ হওয়ার জন্য. Now prospect theory, loss aversion, people try to resist, they fear losses, we fear lose something, and we try to change. So cognitive dissonance also is there, reject new information, we try to rationalize our resistance. পেপার পাবলিশ না করে যখন দিব্যি চলে যাচ্ছে রে ভাই, তাহলে মাথাটা খারাপ করছিস কেন? My mental resistance. It was a pressure before you become a full professor. Now after you full professor, you have only one job, how to disturb the vice chancellor. Nothing else. পেপার পাবলিশ না করলেও আপনার চাকরি টিকে থাকবে, করলেও ঠিক থাকবে, পড়ালেও ঠিক থাকবে. So you see, now we have find
Rationalize the resistance. Now if you say, Islam साहब कुछ पेपर ऊपर पब्लिश नहीं हुआ, 2 साल हो गया, सर कुछ लिख रहे हैं, अरे नहीं भाई, देश की हालत बहुत खराब. Rationalize it. অনেক লিখেছি ভাই, আরে ছোট বাচ্চাদের করতে দাও, ইয়ং ছেলেমেয়েরা করছে, সবই আমরা করব নাকি, ওদের করতে দাও, আমি একটু ভিসি সাহেবকে নাড়াচাড়া করি, উনি কিছুদিন শান্তিতে আছেন উনার. Now this is the one, avoid the situation that challenge our thoughts. Now we try to avoid. I have a kind of, you can say, my views of how is life. You have to be a good teacher, you have to be a good researcher, you have to, in business school you have to earn more. We promote people also to see how much consultancy they do in the industry, how much they earn for their money. So most of us which teach in business schools, we earn more money than our salary from the industry. So that is also there. So I have an idea that a business school professor, if he is a marketing professor, যে জীবনে একখানা সাবান বিক্রি করেনি, সে মার্কেটিং পড়াবে কেন? With apology to any marketing professor here, you can pick up anyone else. It can be on anyone. জীবনে একখানা কেস আমি করিনি কোনো কোর্টে, ওই LLB তে প্র্যাকটিসিং এর সময় কিছুদিন কোর্টে গিয়েছিলাম, just to watch how this is done. But I teach corporate law. Funny. আমি corporate law পড়াই. Now, so we want to change our views. We have to do, therefore, there is, planned behavior, 1991, very famous thing, that how we have to change what kind of things we resist us. One is attitude. And where from this attitude comes? Because I don't see value perceived in my change. To give you an example, you can see the father is very learned, MSc, PhD, professor, or lawyer, or even a chief engineer of a department, but he is just planning the long modern television remote control. Because to read those buttons, he has to read that big LG or Philips or Sony TV booklet. So many buttons. Have you seen your complicated, nowadays so complicated, কোথায় হাত লেগে কি বেরিয়ে যাবে সেই ভয়ে ধরেই না, ওরে আবার লেজে গুবরে হতে হবে ড্রয়িং রুম। তো চ্যানেলগুলো তো জোগা খিচুড়ি না। So the biggest example to resistance, I don't see any value in this. तो अब जब तक प्रोफेसर था तो घर में कोई पियोन नहीं था, डायरेक्टर वीसी बनने का ही तो फायदा है। ऑर्डर दे, बीबी के अलावा एक और मिल गया ऑर्डर देने का, रामो न्यूज लगाओ। Director does not want to learn a new thing. Resistance, attitude. Otherwise, you can see such a brilliant person, such a brilliant professor, brilliant person. How many days he will take to learn the TV remote control? But is না না না, আমাকে পুরো ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুমুল পরিবর্তন করে তুমি আমাকে এলডির রিমোট দেখাচ্ছ। এ করার জন্য তো ইউনিভার্সিটি একটা বেড়া রেখেছে বেতন দিয়ে। ধনঞ্জয় एनडीटीवी लगाओ, simple. So we don't see any value in this change. I don't see any value, additional value in that. Sometimes it works reverse. Every time my wife asked me when I was a professor, now I told before joining that bhai 32 বছর হয়ে গেছে, মাস্টার মশাই অনেক করেছে, এখন বাড়িতে 24 ঘন্টা বেয়ারান না থাকলে তো আর উপাচার্য হওয়ার ফায়দাই কি হলো? এত করে করে এত জায়গায়, তো এখন ছাড়া পেয়েছি। ওই রামু আছে, ব্রেড লাও। নাহলে আপনি ভারতবর্ষের অর্থনীতি নিয়ে পেপার লিখছেন, মেথোডোলজি নিয়ে গলদ ঘর্ম হচ্ছেন, এর মধ্যে কেন গিনি এই একটা ব্র্যাড, এই ব্র্যাড ফুরিয়ে গেছে, ছেলেটা স্কুল যাবে তো নিয়ে এসো। अच्छा, that provides sadistic pleasure. जिस बंदे को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्डर नहीं दे सकता, वो किसका ऑर्डर ले रहा है? So she is also a management graduate, she did her
मास्टर्स इन मैनेजमेंट एंड ऑल। ऐसे तुम यार, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। 25 रुपए का ब्रेड ड्राइव करके कौन जा रहा है 3 लाख रुपए पे स्केल वाला आदमी? 1.5 घंटा मेरा खत्म हो गया इसी ब्राउन ब्रेड के चक्कर में। एक दुकान में डायरेक्ट मिलता नहीं, और गलत वाला लेके आ गए तो और एक थीसिस सुनना पड़ेगा, आपसे एक ब्रेड भी नहीं खरीदा जाता। तो 4 दुकान, अच्छा उनको पता है तो डायरेक्ट चले जाते हैं पंडित जी के किराने में। मैं तो शर्मा जी की में भी जा रहा हूँ, हाँ भाई ब्रेड है, नहीं अग्रवाल, इधर उधर करते 1 घंटा। मैंने कहा हिसाब लगाओ जरा, मेरा कंसल्टेंसी फी है पर डे 1 लाख रुपए, 8 घंटे का काम का। तुमने उसमें से 1 घंटा ले लिया 25 रुपए के ब्रेड मंगवाने में। तो ये 5,000 25 रुपए का ब्रेड खाने में तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? 20,000 का ड्राइवर रखो और ब्रेड मंगवाओ, फिर भी उसका प्राइस बनेगा 25 रुपया प्लस 10 रुपीज, 35 रुपीज कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट ब्रेड। लेकिन तुमको तो है बस अल्लाह मियां ने दिया है कि सवाब होगा, इस बंदे को भगाओ। मैंने कहा 5,000 25 रुपए का ब्रेड कौन खाता है भाई? But what I was doing when I was taking fun, making fun of it and trying, what I'm resisting. I'm resisting to do this because I don't see a value, the familial value of bringing that back. I don't have any value. আমার বাবা বাজারে যেতেন, ওই মাছটা নিজে দেখে আসছে। ইকোনমিক্সের প্রফেসর ছিলেন, দেশের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন আসামের, কিন্তু even when he was so busy, ওই মাছটা নিজে দেখে আনতেন। He put a value in that small work also. And ironically, he was professor of economics, not me. But he found an economy value added, that if you do something for the family, it has a value, and you add that 1 hour spent is invaluable. You cannot divide it by your consultancy hour. But because I don't put a value, my attitude is against it. Are you getting my point? Subjective norms, then we have peer pressure or leadership influence. We get change because there is a peer pressure. सबको publish कर रहे हैं तो मुझे भी publish करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में तो खास तौर से हम दुखी इसलिए नहीं है कि हम दुखी है, हम दुखी इसलिए कि पड़ोसी सुखी है। So that is the biggest pressure in ours. अच्छा खासा टीवी चल रहा है, पड़ोस में थोड़ा सा लंबा साइज हो गया, मेरा हार्ट अटैक हो जाता। अब मैंने कहा बीबी को साइज बढ़ाओ और हर साल बढ़ाओ, पेमेंट तो यूनिवर्सिटी करेगी। बीसी साहब की आंखें कमजोर हो गई है, 10 इंच बड़ा कर दो। कि डायरेक्टर सबको आजकल दिखाई नहीं देते, तो 150 वो आते रहते है ना। अभी ज्वाइन किया नहीं, 6 महीने पहले नया गाड़ी खरीदा है। ज्वाइन करते ही रजिस्ट्रार साहब आ गए, सर वो पहले वाले डायरेक्टर ने फॉर्च्यूनर खरीदा था सर, तो 10 साल हो गया सर, एक नया फॉर्च्यूनर खरीद लिया। मैं कहा भाई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए इससे बड़ा चक बन जाओ। तो तुम ज्वाइन किया नहीं, तुम मक्खन ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाना शुरू कर दिया। पुराना गाड़ी का क्या हुआ, वो कब खरीदा गया था? बोले 6 महीने पहले खरीदा। उसका क्या हुआ? नहीं सर वो डीन साहब को दे देंगे। क्यों? नहीं सर वो उससे पहले वाले डायरेक्टर के पास फॉर्च्यूनर था, तो सर एक नया ले लिया जाए। Why? Why? Because there is a peer pressure. So when you go to seminar, some hotel, you go somewhere, so गाड़ी से उतरने से ही पता लगना चाहिए कि बंदा झुमरी तलाइया इंस्टीट्यूट का नहीं। So that is kind of influence, societal consumerism. अच्छा हम अगर प्लेन जो उल्टा करें, हमारे पिताजी बताते थे कि अगर उल्टा कर दिया जाए, विद्या ददाति विनयम, बचपन में पढ़े थे, फल दे पेड़ जो है झुक जाता है, सब बकवास है, कोई नहीं झुकता। मास्टरियों का जो हाल है इस देश में, कोई नहीं झुकता।
लेकिन मान लीजिए आप 2 दिन पैदल चल दिए, मेरे बंगलो से मेरा ऑफिस, जो वीसी डायरेक्टर का ऑफिस है, वो 250-300 मीटर है। 5 बजते ही पीए फोन करेंगे, गोपाल गाड़ी लगाओ, सारे निकलने वाले हैं। अब सर मागरिब के नमाज बगैर पढ़ के निकलेंगे नहीं। वो 6:35 में हैदराबाद, तो 1 घंटा वो ऐसे ही ऑन करके बैठा हुआ है नीचे। ड्राइवर की भी क्या जिंदगी है भाई, बहुत जल्दी सोच रहा हूं उसको बस में ट्रांसफर करो, वो ठंडा खावा खा लिया बेटा, वही पड़ोसी से दुखी है। बहुत जल्दी आने वाला है मेरा कोई डिप्टी रजिस्ट्रार आके बोलेगा, सर गोपाल इनको रोटेशन करना चाहिए सर, गोपाल डायरेक्टर की गाड़ी चला रहा है, उसको बस में कर दे। अब वो जो बस चलेगा पसीने पसीने, तो लोग कहते हैं बेटा गोपाल बड़ा ऐसे ही खा रहा था। बाकी चारों ड्राइवर की मेंटल स्टेबिलिटी इतना अच्छा बनेगा, अदरवाइज लड़ते रहेंगे। सो यू सी द इन्फ्लुएंस। नाउ इफ यू डोंट सी, अगर एक दिन आपने छोड़ दिया ओके कि नहीं मैं तो राधा किशन बनूंगा, और 250 मीटर के लिए कौन गाड़ी चलाता है भाई, और 1 घंटा एसी लगा के बैठ जाता है वो। In one fine morning you said, I will not do that. You know what will happen? Anybody? What will happen if you walk from the VC's office to the residence? Yes? Health. बहुत अच्छा बच्चा है, हेल्थ हमारा खराब हो जाएगा भाई। फिर वो पीछे से आवाज आएगा, सर 1 मिनट, सर वो मेरा सेमेस्टर में ही है। इस देश में मुख्यमंत्री क्यों ट्रेन में नहीं चढ़ पाता? अरविंद केजरीवाल चढ़ने की कोशिश किया, 2 हफ्ते में ट्रेन जाम हो गया। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर आज भी ट्रेन में जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के मिनिस्टर्स को अपना ऑफिशियल गाड़ी लेकर के घर जाने की अनुमति नहीं है, ट्रेन तक ऑफिशियल गाड़ी ले जा सकते हैं, वहां से आप टिकट कटा के अपनी क्षेत्र में जाइए, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर को ट्रेन में देखते हुए अपना ये नहीं बसा, बहुत परेशान है सर, नौकरी लगी नहीं सर, मेरा ट्रांसफर सर, हालत खराब हो जाए। तो चाहते हुए भी आप पैदल नहीं चल सकते। उसमें से एक दिग्गज पंडित आएगा, आपके साथ बात करेगा, और कुछ काम नहीं है उसके साथ। और सर कैसा हैदराबाद कैसा लग रहा है सर? सर वो मार्केटिंग वाला सिलेबस सर हमने चेंज कर दिया। आप मुंडी हिला रहे हैं। आप गए घर और वो जाके बाकी मास्टरों को, आज मैंने वीसी को समझा दिया, देख लो कैसे मुंडी हिला रहा। उसके 3 चमचे और बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वीसी साहब इसकी बातों पे मुंडी हिला रहे थे। वो अपना प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, लेके इसी साहब के पास आने लगे। सर आपने एक बार यदि आपना कथा तो सर सुनने ने क्यों बोले दे ना। एक पैदल चलना, ये कह रहा है सेहत अच्छा होगा, सेहत खराबी का 2 लक्षण बताए और 12 लक्षण, सेहत खराब हो ही जाए। सो यू सी, we therefore perceive behavioral confidence in it. We do not have adaptation confidence. That if I do something, this adaptation confidence, simple example. সাঁতার যারা জানে না তাদের 4 ফুট জলেও ডুবে যাওয়ার ভয় হয়। If you go to 5-star hotel, you'll find the water is 2.5 feet. আমরা আসামের লোক, আমরা জন্মে সাঁতার শিখি মায়ের পেট থেকে। তো 4 फीट जले, करोड़पति साहब 5-स्टार होटल के पूल में, ट्यूब इधर लगा हुआ है, क्या कर रहा, क्या है भाई? एडेप्टेशन कौन था? सो पूल के पास हम बैठे थे, because he is not adapted to the water and he thinks that he will die in 4 feet water. बहुत देर तक देखा, because you know the mostly smokers area is near the swimming pool, so you can smoke and you can watch also. But so I went there. मैंने कहा भाई साहब आपका हाइट 5 फीट है, पानी 4 फीट है, ट्यूब काहे को गले में बांधे हुए हो? So anybody who has learned, আমরা এটা আমাদের মামাদের দায়িত্ব। আসামে গরমের ছুটিতে মামা বাড়িতে গেলে মামারা শেখায় কলা গাছের সঙ্গে বা কলসি উল্টো করে, some floater we used to have, and if you go to your mama badi, nani badi আমরা বলি,
Then you learn it from your grandmother's home. But the first few days of floating is very fearful. You hold it very tight. Confidence in adapting. Once you know how to float, then you know you don't need anything. Your human body is, the physics is against its drowning. Body mass आपको इमीडिएट डुबा नहीं सकता, या आपका माइंड आपको डुबाता है. So adaptation in this one, therefore most of us adopt this theory. This is my theory. मैं ऐसा ही. Most of us resist inertia because we have accepted a policy or mental setup where we say मैं ऐसा ही, जो करना है कर लो. मेरा हाथ का लिखावट गंदा है. Good handwriting. I did an experiment at IIM like 10 years ago when I saw so bad handwriting coming from brilliant students. IIM students are very brilliant by nature, by their admission policy, but their handwritings are worst. इस मामले में लड़कियों की हैंडराइटिंग अल्लाह मालिक अच्छा है, लड़कों का तो नाउजुबिल्लाह. At one point of time, so I asked my director, Professor Sinha, the sir ekta handwriting graphology workshop korabo. Obviously, you know the clerk what kind of things they will write in the file, not related to management syllabus. Handwriting is not in our curriculum. Why spend money to bring a handwriting trainer? All these things, সবুজ কাগজ থাকে ফাইলের মধ্যে. মানে এই ভারতবর্ষের মানে 80% সমস্যা এই সবুজ কাগজগুলোতে থাকে. So he wrote a half page against it. Then I went to the director and say, sir, डीन साहब को कॉन्स्टिपेशन है और नोट शीट में डायरिया है. इन्होंने फालतू में ये सब चीजें लिख दिया. बच्चों की हैंडराइटिंग अगर खराब है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इनको अगर एक अपॉर्चुनिटी दे हाउ टू मेक हैंडराइटिंग. some has come from English medium, some has come from local medium, some from Bihar, some from Kerala. So we cannot have an uniform standard of handwriting. You know, we did that workshop. Thanks to my director, he could see the reason, he approved it, we call it. In 2 days of practice, my students in that batch, 2013-14 batch, their handwriting changed. Because we could move out that मैं ऐसा ही हूँ चल. You fall in love with your bad handwriting. And then you give a kind of satisfactory cover to it. এই পড়তে একটু অসুবিধা হবে, দেখে নিস রে. Apologies to all supervisors. So give it to your PA নির্লজ্জের মতো বলে, এই সন্ধ্যা এটা টাইপ করে দিও, দেখে নিও একটু আমার হাতের লেখাটা বুঝো তো, একটু জিজ্ঞেস করে নিও. সন্ধ্যা টাইপও করবে, জিজ্ঞেসও করবে. ইউনিভার্সিটি না ইউটিলিটি বোঝা যাচ্ছে না. So Aliah utility has to be improved. Because मैं ऐसा ही हूँ. I have already accepted my bad handwriting. And I do not see any value to change it. If I change it, I get more marks. If I change it, my examiner, even he is fighting with his wife and आंसर स्क्रिप्ट देख रहा है, उस वक्त मूड बहुत खराब होता है. बहुत लोग फेल करते हैं उस जमाने में. उसमें उसका मूड अच्छा होगा, है कि नहीं? So at one point of time, what do we do now? And there we stop. We have to therefore think about the power of habit. It is 11:30. Yeah. We can go up to 12:15. So, fine. So, this is a book you can download. You can mail me. I can give you a PDF copy. You can download a PDF copy. You can buy from Amazon. But you read it. At least first chapter, first 2 chapters. Charles Duhigg's Power of Habit. Habits are cue, routine, reward. Very simple.
anything we do, now we said we are inertia, understood? Now we want to change it. We want to adopt AI, we want to adopt email, we want to adopt how to use a net banking password and all these things. Anything you remember which changes your past habit, you will have to face this problem. So, to cut a long story short, this is an experiment done in American Medical University where a person who lost his, Sriti Bhangsho, who lost his memory, he was a patient, and one day he went out of the hospital and they could not find him, and later on, surprisingly, they saw that the guy went out of the hospital, in accident he has no memory, but he reached his home. And that's why America में there's एक यूनिवर्सिटी में 15-15, 20-20 नोबेल लॉरेट रहते हैं. हमारे यहाँ because they ask the right question. यहां अगर वो पेशेंट मिल जाता है तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल से लेके शास्त्र मंत्री तक कहता है अरे भाई थैंक गॉड बच गया, नहीं तो फिर वायरल होने वाला था. चपरासी को डांट दिया, तुम देखते नहीं हो पेशेंट चला जाता है इधर उधर, चलो बच गए तुम, पेशेंट घर पहुंच गया, फैमिली को मिल गया, कहानी यही खत्म. That university did not stop at there, inertia. They asked the question, इसका अगर मेमोरी लॉस है तो घर पहुंचा कैसे? And that brings this big study in memory. They found out after much research that our habit is deeper than our memory. और जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको जानते हैं, एक एक रकात में हम कॉलेज का कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, फातिहा और सूरा. कुछ सस्पेंशन हो जाते हैं, कुछ सस्पेंशन विड्रॉ हो जाता है. You are doing it by habit. और अगर मौलाना इमाम साहब पढ़ा रहे हो तो वाह. We are doing it by habit. So, sometimes we lose track. Fine. आजकल मैं बेटे का टेस्ट करता हूं, बाप बेटे एक साथ पढ़ता हूं तो हमेशा उसको टेस्टिंग, क्योंकि तेरा बाप भी तेरी उम्र का था बेटा, भूल रहा है? हाँ बेटा 4 रकात हो गया था, हाँ पापा. जबकि मुझे मालूम है 3 रकात में हमने गलती से सलाम फिरा दिया. उससे क्या मतलब? So he has left, he is doing it by habit, but we are saying that the habit formation is good. Affirmation, habit formation होगा. So many of the things we do by habit, why? Cue, reward, and reinforcement. Cue, routine, and reward. Fine. So whatever we do, and this is where I'm going at, we have to put it in our habit loop. So आज का AI का लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ध्यान देके चला जाऊंगा, क्योंकि AI का हैबिट अगर आप फॉर्म करेंगे आज से तभी ये काम आएगा, नहीं तो अगले साल इसी वक्त शायद यार पिछले साल एक बंदा आया था, कुछ बोला था, कुछ हंसे थे, कुछ मुस्कुराए थे, कुछ जोक क्रैक किया था, बोरिंग नहीं था, थैंक गॉड, पूरा हफ्ता झेलने के बाद थोड़ा मुस्कुराहट मिली. तो ऐसी यादें होंगी लेकिन हैबिट चेंज नहीं होगा. Only 1% of the people can adopt that AI in their daily habit because there is a resistance to change. Google से काम चल ही रहा है तो डीप सीक में सर खपाने की क्या जरूरत? मैं ऐसा ही हूं. मेरे पास 2 रिसर्च स्कॉलर है, बेटा ये सर निकाल दो तो हो गया काम, मुझे सीखने की क्या जरूरत है? इनको JRF मिल किसे रहा? किसी के लिए मिल रहा. Conscious effort. So you have to first develop a cue. What is cue? That which will trigger your change habit. So now you have to change why AI. So you'll start with, you can ask yourself, you can read some paragraph, you can watch some YouTube video, why AI is important. You don't need to do anything else. Going home, sitting in the bus or in tram or in metro, you just watch one video. Far interesting than Sunny Leone, I can tell you. So you read that.
Until and unless the cue is established, your habit is not going to form. What is that mental cue? कि मुझे फायदा क्या होगा? इंसान बहुत ही स्वार्थ किस्म का जानवर है. Human being is a very selfish animal. You have to tell it what is the benefit. Consciously, subconsciously. गाड़ी घोड़ा करे जी, लेखा पढ़ा करे जी, उस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूं. So why our teachers, our forefathers used to tell this? So lekha pada kore chi, gadi guda chode she. Yeah, I remember. So you can imagine, पिताजी ये बता के नहीं गए, जो मेरे क्लास में फेल हो गया क्लास फेलो, वो फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे डबल साइज का गाड़ी चढ़ता है भाई. हम पीएचडी करा करके गाड़ी लोन में खरीदेंगे, ईएमआई चल रहा. तो लेखा पढ़ा करे जी, ईएमआई भरे से. At one point of time, therefore we have to create that. AI से क्या फायदा होगा? Until and unless you do not find videos, lectures, read, watch, Google, what is the future of AI in your area, don't get into this. भूल जाइए ये सब. Time waste मत कीजिए. So if you do not find, if you are studying Sanskrit, for example, Hindi literature, Arabic, Islamic studies, chemistry, biochemistry, anything, ask yourself where AI will be implemented in my area. आज से 30 साल पहले जब मैंने मास्टर्स की थीसिस डिसर्टेशन लिखना था, nobody else is writing, everybody is submitting an assignment and getting marks. I said I will submit a dissertation in my masters. And I started working on computational linguistics. Linguistics में कंप्यूटर का implementation जो आज की तारीख में देख रहे हैं OCR है, optical character recognition. In 1992, I do not have even a single professor in my department at Aligarh who even understand what is computational linguistics. You have to write airmail to a professor in Brighton, in London, to send me materials, and he sent me materials. What was the cue? The cue was that I want to do something which will be sustaining me in next 20 years. Computer नया नया आ रहा था, 286 मशीन हुआ करती थी. उसके बाद तो 386, 486, Pentium आने लगे. So first establish the cue. If you do not have internalized, and if you give a very normal resolution, why that person, the body is so nice. You see, those who do Surya Namaskar or morning prayer, जो प्राणायाम वगैरह करते हैं जो लोग, या हम in our religion, those who get up for his Fajr Salat and all, initially अल्लाह खुदा जन्नत वो सब कुछ नहीं था. इनिशियली तो पिताजी की पिटाई, चिल्लाना, वही था. दोनों भाई हम इतने परेशान थे, जाड़े के दिनों में कंबल में इतना अच्छा नींद आती है फजर के आसपास. और उस वक्त मेरे वालिद साहब तहज्जुद के नमाज के लिए जग जाते थे. And he does not want to shout at us. What he does, he prays his tahajjud very loud voice. और हमें करीबन ये अलार्म जो बजता है उसको ऐसे बंद कर देते हैं ना हम लोग, फिर सो जाते हैं. लेकिन ये तो तहज्जुद चल रहा है और वो भी पिताजी का, इनको कैसे बंद करोगे? तो दोनों भाई कंबल के नीचे बड़े परेशान और सोचते अल्लाह मियां नमाजी फादर से भी हमें ही मिली. पड़ोस वाले राहुल के पिताजी को नहीं मिला, अब्दुल के पिताजी नहीं मिले, हमें ही मिले. ये क्या मुसीबत है? फिर बाद में अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, वो विधायक हो गए, हम आजाद हो गए. अब उनके पास 2 बच्चे नहीं है, 1,75,000 बच्चे, उनको लेके वो उलझ गए, हमारी जान छूटी. But by this time our habit has formed. And my father used to say working habit. जो मैं अपने बेटे को कह रहा हूं, बेटा हॉस्टल में जाएगा, नमाज फजर के पढ़ेगा नहीं, तेरा बाप ने नहीं पढ़ा, तू क्या पढ़ेगा?
हमें पता है, लेकिन ये हैबिट अगर बचपन में बन गया तो जिस दिन तुझे पढ़ना आएगा तो उस दिन पढ़ पाएगा। हमारे दो साथी अलीगढ़ में तो अच्छे अच्छे स्टोरीज हैं, प्रोफेसर जमान भी बता सकते हैं। एक आया मदरसा से, आदि फाजिल कामिल को होते ना, तो उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है। आके बंदे ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले ली। हाफिज सिबगतुल्लाह सिद्दीकी साहब आजकल हिंदुस्तान के सबसे बड़े एयरलाइंस कंपनी के सारे एयरक्राफ्ट मॉनिटर करते हैं। इज एन ऑपरेशंस मैनेजर हु मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ, जो मैनेजमेंट के लोग जानते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो हवा में कितनी देर रहेगा और क्योंकि वो अगर एयरक्राफ्ट नीचे बैठा हुआ है तो कंपनी की नुकसान है, वो उसको उड़ते रहना चाहिए, उसके पैसे लगते हैं। तो ही इज एन ऑपरेशंस मैनेजर, गो एयर, जेट एयरवेज, सहारा, बड़े बड़े जगहों में काम किया। आजकल एक बड़े इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो वो सिबगतुल्लाह साहब पहले 6 महीना तो आए, और उनके पार्टनर थे एक हमारे आसाम के साथ। इनके फादर जज थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो तहज्जुद वहज्जुद छोड़ दीजिए। तो ये इंग्लिश ऑनर्स के मेरे क्लास फेलो है, आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी के, आजकल प्रोफेसर है आसाम में। 6 महीने बाद एक दिन सिबगतुल्लाह साहब अपना बोरिया बिस्तर बांधने, यूपी अटावा के रहने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव के वहां। तो क्या सुहेल भाई सलाम वालेकुम। हाँ, कहा सुनी माफ सुहेल भाई, कोई बात हो गई तो सुहेल बेचारा रूम पार्टनर, क्यों जा रहा भाई, क्या हो गया, क्या परेशानी। बड़ी मुश्किल से प्रेशराइज किया गया, बता तो सही क्या हुआ, पैसे घर से पैसे नहीं आ रहे, क्या है प्रॉब्लम। तो हाफिज साहब ने बताया कि भाई 6 महीने क्लास में जा रहा हूं, ये एक अल्फाज भी समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बताया नहीं कि इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, उर्दू में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो चल पड़े। बहरहाल वो बड़ा मशहूर किस्सा है और मेरे बायोग्राफी में मैं लिखूंगा, वो 2 लोग शर्मिंदा ना हो। तो मेरे दोस्त जो ये आसाम वाला था जिसके बाप जज थे, इन्होंने कहा कि सिबगत भाई हमारी भी हालत कुछ ऐसी है। मुझे क्या हुआ, तू तो इंग्लिश ऑनर्स का है भाई, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। बोले इंट्रोडक्शन, हमारे अलीगढ़ में रैगिंग नहीं होती है, लेकिन शुरू में सीनियर्स लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। मतलब आप सही से चल रहे कि नहीं, कपड़ा अच्छा पहन रहे नहीं। अलीगढ़ में ये मना है, फ्राइडे के अलावा आप शर्ट बाहर नहीं कर सकते, यू शुड बी टक है, छतरी यूज नहीं कर सकते, चप्पल पहन के बाहर नहीं जा सकते। तो ये 3 मंथ्स तक हमारे सीनियर वॉच करते थे इंट्रोडक्शन पीरियड में। तो इंट्रोडक्शन पीरियड में बाकी कुछ हो ना हो, लड़का सीनियर उसके सामने अच्छा बनने के लिए नमाज 5 वक्त जरूर पढ़ता है। So what happened? My friend told him, no, my problem is not with English, it is something different. बोले यार इंट्रोडक्शन की जैसे मैं भी तो मस्जिद जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कौन रकात किधर पढ़ रहा है, इधर उधर देखा। So they came to an understanding that he will teach him English from ABCD, grammar, Martin, everything. My English honors friend, he taught him English. And that Hafiz taught my friend how to pray 5 times. अब जो कभी सबाही मकतब गया ही नहीं है, परवरिश नहीं हुआ, जज साहब थे, बड़े बड़े डकैतों को जेल में भेज रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे, वो समय नहीं मिला उनको। So working habit if you do not have, so even if you don't live, हमारे चाइनीज बैटरी की तरह हमारी भी ईमानदारी चलती थी अलीगढ़ में। फ्राइडे में तबलीग वालों ने पकड़ लिया, 3 दिन की चिल्ला, तो 15 रकात हम किसी गांव में जाके मस्जिद में, हाँ ये नियत सीख लिए, दोबारा कलिमा 5 और रख लिए, दोबारा सूर्य आलम तरह तक हो गया। और वो चाइनीज बैटरी की तरह हॉस्टल में लौटते ही उसका चार्ज खत्म होने लगता है। तो मंडे में तो पढ़ा 4 रकात, ट्यूसडे में मुश्किल से 2 वक्त पढ़ लिए, और फ्राइडे वेडनेसडे 8 बजे चित्रहार, ये एकदम बैटरी पूरा डिस्चार्ज। उसके बाद तो कोई याद ही नहीं रहता कि 5 वक्त नमाज में। फिर एक दिन तबलीग मौलाना पकड़ता है, फिर चार्ज करता है। सो दिस इज एन हैबिट। So
When do we learn? Next time. First time is because my father said, you pray. And I got a habit of waking up at Tahajjud time or Fajr time. The reverse can also happen. अब जो 7 बजे जगता है उसको अगर एक दिन 5 बजे जगना पड़े, दिन भर उसका बॉडी जो है रिवॉल्ट करता रहेगा और वो लोगों को बता, अरे यार आज वो मदर इन लॉ आई थी, उनको हावड़ा छोड़ने जाना था यार, सुबह उठा था, दुनिया भर को बताता फिर आज सुबह उठा यार, आज जल्दी घर जाएंगे यार, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह लड़का आ रहा था, लड़की आ रही थी, सासू जी माँ को छोड़ा था, मतलब एक दिन सुबह क्या जग गया, उसका बॉडी रिवॉल्ट कर रहा है, जल्दी छुट्टी ले, उल्टा हो जाए। आप एक दिन ज्यादा, हम ज्यादा एक अरसे के बाद सोते हैं तो सर दर्द होता है, your body wakes you up, whether you are in Germany or America, जेट लग तो सुना ही होगा आप, you wake up at your body clock. So you have to understand that what is the important reward you are getting yourself. At that point of time, what was my reward? कि आज पिटाई नहीं होगी. Because my father, after tahajjud, he goes to mosque, and slowly he calls us to mosque, and sometimes he say, Baba, वजू कर लो, आ जाओ, and then he leaves. और हमें क्या कि आ रहा हूं अब्बा, और फिर वो शैतानी नींद फिर आ गई. अब दोबारा तो वो अलार्म पीठ पे बजता था नमाज के लौटने के बाद. सो दैट वाज द रिवॉर्ड कि पिटाई नहीं होगा, फादर विल नॉट फाइंड मी बैड. तो एक छोटा बच्चा, उसको जन्नत से कोई मतलब ही नहीं है भाई, बट हिज बॉडी इज क्रिएटिंग ए रिवॉर्ड कि समय पे उठेंगे तो पापा अच्छा कहेंगे, एक साथ नमाज पढ़ के लौटते हैं तो वो पूरा तहज्जुद ये करते हैं, तिलावत करते हैं, तो वहां बैठे हैं सुने. Similarly, from any household, if somebody do Surya Namaskar, one thing he has to do is that when the Surya is coming, so he has to wake up early. And that is a reward. He might feel that my body is more cleaner, I am doing these things, I am doing exercise. बहुत लोग हैं ना. So we have to, therefore you write in a piece of paper that if I learn AI, I am research scholar in X, I am a lecturer in X, assistant professor or professor in X, and you write that reward, that in next 1 year I will incorporate AI and this will give me this benefit. If you do not see that reward, you can never get into the new system. Because that cue is the starting. And then you make it a routine, second part. Fine, you create a routine for yourself. That every habitual change needs a regular practice. So even though at any habit, handwriting for example, going back to the exercise example, जिसका handwriting अच्छा है उसको मुश्किल थोड़ा ही होता है. गंदे handwriting वाले को बैंक में जाके सावधान होना पड़ता है. उसका ब्रेन उसको कहता है बेटा अब तो 1000 में 2 बार गलती करेगा, अरे डिस्टर्ब मत कर यार, चेक लिख रहा, TAU बोलता भी रहता है स्पेलिंग. बट इफ इज ए गुड हैंड राइटिंग तो देखिए ना, कुछ सूर्य हॉस्टल वाले उसके पास आ जाते हैं, उसी चक्कर में किसी का हाथ किसी को ले गया, मिलना था किसी को, किसी और को मिल गया कि बाहर तेरे हैंड राइटिंग अच्छे, लिख दे. हाँ भाई वो सब लिखवा लो, लेकिन वो हाथ नहीं लिखवाना चाहिए. At one point of time, you have to therefore align with your academic values. That if I am a teacher of this and if I have to survive in academic world at least next 10-20 years, then AI, data analytics, in whatever studies, Sanskrit, Islamic studies, no matter, library science, if you do not know how to crunch data and analyze it, it is very difficult to survive in next 20 years. Very difficult. That has to be aligned. Initial reward, you can say that if I use AI, things will become much easier. Things which are done manually can be done much more easily. If you use DeepSeek, for example, you write any letter
on any subject, you just give him the clue. Write a letter to my vice chancellor to give me scholarship because of this reason. Without any language, grammatical, you put and enter. In 2 seconds, you will write a nice letter. And then you can change. Then you used to use human brain where you can write your subject and others. But that manual work you will continue to do if you do not know that. So at one point of time, we can start with micro training. Start it doing today. Write in your wall that I will learn or watch a YouTube video or a lecture on artificial intelligence every day. ये नहीं कि एक दिन नहा वहां के बैठे पंजिका देख करके मदन गुप्त का कि आज भाद्र मास के शुरू हुआ एआई, ऐसा नहीं होता। वो प्रोक्रास्टिनेशन में वो सब आता है, नहीं इस बार एआई करेंगे समर वेकेशन में, ऐसा नहीं हुआ। आज कल सुबह देखिए आप, whatever time you find suitable, that I learned one particular thing about AI, I'll give some hints of what kind of things you do, but those things cannot be done in 1 hour. I can give you just only hint. Leverage, tie to career goals. You must see that where you are going to use it. You are doing what? 1 hour or half an hour of AI training, you are or watching videos, reading books. But if you do not see how you are going to leverage it in the next your professional development, आप नेक्स्ट टाइम कहीं अप्लाई करोगे तो सीवी में उस बारे में क्या लिखोगे, ये अगर क्लियर नहीं है तो मेहनत क्या काम करेंगे। You have to tie it to your career goals. So you will find AI based, say AI, you learned AI, you type in your Google, AI language tools, 1000 things will be there. Try 1, try 2, try 3. Next 30 days, you just one thing you try. Don't devote much time, you will get bored, maybe 1 hour. But that incremental 1 hour is equal to 365 hours of AI related information by next 25 April 2026. 1 hour only. So at this time, what you will try one new thing. It's written this semester. You can make it anything. Try new thing every week. You try new thing this year. So it can be a yearly plan. And calibrate. Celebrate and calibrate adaptability. Reward the effort. How do you bring in that innovation? If you want to reward yourself, write a small blog in your Facebook page or in your LinkedIn page. I am an AI learner, I teach Hindi. I am an AI learner, I teach geography. I am an AI learner, I am a research scholar in history. You write a small blog, you will immediately get connected to thousands of people who are doing the same work. Somebody in Indonesia, somebody in Brazil. So now you have a peer group. Immediately, you will come to know that there are thousands of people like you who are also learning the hard way, sitting in Argentina, weaker and more expensive internet than us, less connectivity. But you will find one school teacher in Pune earns millions of rupees because from the LinkedIn, she became famous in doing innovative teaching. You have heard the name of Khan Academy? How it started, anybody knows?
most famous name in online teaching. So you never know. You might feel weak. अरे आलिया कौन सा IIT है, IIM है, बस डिग्री सही सलामत मिल जाए, चाहे वह हो जाए ठीक ठाक, है ना, बीसी साहब टिक जाए. So at one point of time, at any point of time, you might think that this is your basic level. आपका एक्सपेक्टेशन कम हो गया, समय पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए. बहुत इस देश में बहुत लोग ये भी दुआ करते हैं. But now you are adding a value to your work. Whether your degree is in time, more than that, you will say that I have 1,500, 200 network in my LinkedIn who are learning how to use AI in XYZ. If you are a business student, MBA class, you love marketing, if this is a subject you like, you create a reward for yourself. But next time when I go for placement interviews, I will not just say, my name is Shudindra Mondol, I did my this and that. ये linear जो रामायण सुनाते हैं ना, बहुत बोरिंग है. और हम इंटरव्यू लेने वाले भी जब तैयारी नहीं करते ना, पूरा सीवी सामने रख के वो बंदे को बताते हैं, ओके टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो सीवी क्यों मंगवाया था बे? How getting nothing? But that question is a very big opportunity. 99.99% students starts with, my name is Sanjay Kansin Subhastava, I did my schooling from Hooghly Baltola Higher Secondary School, and I did my BTech from Shivpur B Engineering College and MBA from IIM Joka, blah, 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 blah. तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने? So what? जोका से और भी 600 बच्चे निकलते हैं हर साल. Why should I hire you? That's the question. Tell me about yourself, is that the question? Why should I hire you? So please take that kind of mental rewards. The next year when I'm going to do, I said, I have studied AI implications. I have studied how in Latin American company is using AI to identify its potential customers. यही कुछ नहीं है. अब ये बताइए, this boy who has shown this extraordinary, the interview committee will remember him, or another 50 students they have interviewed, who have given, the replies like that. My name is Jugan Mondal, I did from BTech, from blah, 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 blah. My special paper was marketing. ये किराने का दुकान का मार्केटिंग प्लान नहीं बता सकता, वो MBA कर रहा. Because he has got the degree, but he has not learned marketing. फिलिप कॉटलर की किताब रटे जा रहा है, 4P of marketing, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, वो सब आता है. उस 9.5 CGPA है. उसको बोले, yes, okay, Mr. Deepak, can you tell us, if I have to make the canteen of Aliah University, the customer base is 600. Can you give us a very brief plan to make the customer 1200 next year? आई सर ये तो सिलेबस में नहीं था. मार्केटिंग मैनेजमेंट में आलिया यूनिवर्सिटी की कैंटीन कहां से घुस गई सर? बाहर निकल कर, साहब मोदी के भक्त हैं, नौकरी देना ही नहीं चाहते, असल में उल्टा फुल्टा सवाल कर रहे हैं, साला देश का हालत खराब हो गया. अब वो हमें चिंता मत करो, हम दुबई जाएंगे, इस देश में हमारे लिए कुछ रहा ही नहीं, दुनिया भर के बहाने. बट तुम किस बात के MBA किए हुए यार? तुम इस यूनिवर्सिटी के कैंटीन, हमने एक बार चलाया था. वन ऑफ माय प्रोफेसर हु इज द वाइस चांसलर ऑफ आरवी यूनिवर्सिटी नाउ इन बैंगलोर, द प्रोफेसर, तो एवरीबॉडी सजेस्टेड सिलेबस, सिलेबस हमारा जन्म पत्रिका, तो वो हम सब उसने सिलेबस ही नहीं दिया. बोले कि हमारी मार्केटिंग क्लास में बच्चे हमारे IIM काशीपुर का कैंटीन को 1 साल चलाएंगे, और कितना स्टूडेंट बढ़ा, कौन सा आइटम से स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, कैसे उसको पॉपुलर करते हैं, लिफलेट बांटेंगे, क्या करेंगे, FM रेडियो में बोलेंगे, आइए IIM काशीपुर में चाय पीजिए, क्या करें, I don't know. If they have to pass the exam, at the end of the year we'll see how much they have run that. हम सब लोग वही बाकी लोगों से दुखी है.
हमारे जैसे ज्ञानी लोग एकेडमिक काउंसिल में बैठ करके ऐसे उसकी बैंड बजाई है। हम अच्छा खासा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तू नया इनोवेशन लाएगा, हमारे लिए तकलीफ हो जाएगा बे। तो हमने कहा कैसे मार्क्स कैसे करेंगे? नो 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 प्रोफेसर उनियाल, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? इवेल्युएशन प्रॉब्लम होगा, एआईसीटी का रूल्स नहीं मानेगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल पास नहीं करेगा, दुनिया भर का चैलेंज दे करके बेचारे को। बट ही इंसिस्टेड कि अब तुम्हारा सिलेबस में अगर सेशन प्लान नहीं है, टर्मिनल नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो कि मार्केटिंग का नंबर दे दोगे तुम एक कैंटीन चला के? You know, that year our student got the highest number of jobs, 43 lakhs per annum, because of that one. When the company came and asked the question, yes, in marketing, what did you do? They did not say Philip Kotler. They said in our marketing management paper too, we ran a university canteen and we had 600 customer, 30 items canteen. By next year, we made it 1200 customers, 55 items. Next 1 hour, they are only talking about that. They forgot everything. है ये सिलेबस में कब से आ गया? वो कंपनी वाला भी चौंक गया ना. So you have to create, therefore, adaptability is that you have to create that mental reward. Otherwise there is no, now you have to create that mental reward. तो अब इस उम्र में जब नमाज पढ़ते हैं, जब पिताजी गुजर गए, अब कोई पीट भी नहीं रहा है, अब देखिए मेंटल रिवार्ड क्या है। बेटा ऐश बहुत कर लिया, लास्ट ओवर चल रहा है, 50 ओवर। वो होता नहीं कि भाई वो बैठ के टीवी के सामने दुआ करते रहते, बस 6 बॉल बचा है, 6 में 6 मार दे 36 और इंडिया जीत जाए। तुझे क्या पता उस बंदे ने क्या खेल रखा है, वो उसको पता। हमें तो लगता है कि 6 बॉल बचा है, चिंता की बात नहीं, मार देगा। तो हमारी यही 6 बॉल 6 ओवर रह गया है। अब मेंटल रिवार्ड बहुत बड़ा दिख रहा है, इतने पाप किए हैं तो अब मेंटल रिवार्ड। लेकिन जो बॉडीली रिवार्ड, so that is something we create now. At the same time, others may not see. So this reward is mental. मन में अगर ये है कि मैं अल्लाह की रजामंदी कर रहा हूं, या मुझे जन्नत मिलेगा, या मैं अपना पाबंदी कर रहा हूं, that is my mental reward. मेरा बगल वाला तो अल्लाह को जानता ही नहीं, वो तो सरस्वती माता को नमस्कार करके आया, उसका मेंटल रिवार्ड अलग है। वो भी इम्तिहान दे रहा है, वो भी एमबीए पास करेगा, मैं भी करूंगा। उसकी सरस्वती पास कराएगी, मेरे अल्लाह पास कराएगा। तो कोई झगड़ा ही नहीं है, ये मेंटल रिवॉर्ड सिस्टम। मैं कहता हूं रब्बी जिदनी इल्मा, या रब मुझे ज्ञान दे, वो कहता है तमस्सुमा जो दीर्घम, अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाओ। सो यू हैव टू क्रिएट दैट मेंटल रिवॉर्ड, अदरवाइज हैबिट विल नॉट ड्रेंच इन ट्राइफ। सो एआई or anything we do, now for example, this is where we start very quickly. What we'll do is that just to give you some kind of mental reward, you see 73% of researchers 2024 are already using AI tools. If you do not use it, you are out of that big league. 74%. So imagine if you are not doing it, you are out of 74%. You are those 24 small ones. 60% of academics, teachers like us, they use for literature review and data analysis, 2023 data. Now it has gone so many high percentage. It is 23 data, so you can imagine. ChatGPT, 58% of people. Now the bigger one is coming. What is that? What is the Chinese version of ChatGPT? DeepSeek. More robust in many ways. Elicit is an AI literature sort, 32%. GitHub is now loaded onto your Windows system. You know that automatically. So this is 23, 24, and biomedical sciences, social sciences, engineering, everywhere it is getting. So people who are in social sciences, you have more opportunity.
See, only 45% of them are using. If you start using it, you jump to the bigger one. You immediately cross those people. In engineering and other places, there is much more use because they are technological people. Social science, humanities, liberal arts, we are a bit slow in this, but it doesn't matter. You don't need to know Python and R square and all those kind of, R and everything. You don't need to do the back end. You are not an IT engineer or system analyst. You are a historian, you are a sociologist, you are a linguist. But still, if you add that artificial intelligence. Now, what artificial intelligence does? Very simple one. We call it artificial, but it is basically based on how you make the machine know about yourself. So simple artificial intelligence is when you use a laptop and fill up your name and form, next time you want to fill up, you write and it completes it Nazrul or Nivedita. Because the machine has already learned this computer used by someone who always write Nivedita Chakravorty or Nazrul Islam. So this is guessing. So more of the simple version of this is that you have made, the machine has learned your habit, inputs. And from there it is trying to auto-fill up. That's the simple thing we face everybody. But now going forward, what we have to do is that, for example, literature review. One of the biggest research, you can say, activity, those who are doing PhD, did your PhD, you can remember, this is the time when we get into the large ocean of knowledge and we try to find out the gap of the research. That thing Professor Ikram was saying, one thing you do, addition, हम जो PhD के report में आखिरी line में लिखते हैं, चाहे कितना हो बकवास लिखे. This thesis is giving an original idea to the world of sociology. PhD should be granted. Huh? Sometime without reading the thesis. But now it is much easier. You can put your 600-page thesis into any of the AI applications. It will give a very high-sounding report because it has read 1 million PhD theses from Oxford to Cambridge to MIT to all IITs. So it has already said, see, physically for you it is possible to read, say, 1 lakh thesis report from all the professors and then make your mind how to write a thesis report. And that job is easier by this. Because the machine... Yes. So you just upload, it is very simple. In DeepSeek also or in ChatGPT also, there is an PDF uploading thing. So you upload the PDF and you write in the top, please make a critical evaluation report for this thesis. It will read all the pages, it will give you a structure, and this is where, now, $1 million question is coming. Am I going to lose my job next year? तो VC साहब क्यों हमें पैसा देंगे, हवाई जहाज का किराया देंगे और हम 5,000 का टिकट वो एक रसीद नहीं देते. कुछ यूनिवर्सिटी 5,000 रुपया देती है, मेरी यूनिवर्सिटी मुझे 2,000 देती है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी 5,000 यूरो देती है. तो एक दिन मैंने अपने VC साहब जो मेरे टीचर हैं, नईमा अख्तर, आजकल नईमा खातून AMU के VC हैं, मेरे टीचर थे, उसका हस्बैंड भी मेरे टीचर थे. तो मैंने कहा नहीं मापा, एक तो आपका 2,000 मिलती नहीं है, मैं लिख के थीसिस चेक कर रहा हूं, मेरे बेटे को चेक मिल जाए तो गनीमत समझो. यूनिवर्सिटी पैसे टाइम पे भेजती नहीं. और ये 2,000 रुपया क्या है? इससे तो अच्छा आप शमशाद मार्केट में मुझे ढाबे में चाय पिला दो यार, ज्यादा इज्जत महसूस करूंगा. So that's it. European University, I supervise some research scholars in Netherlands at Maastricht University. So it gives me 5,000 euros. अब जाके थोड़ा थोड़ा गाड़ी गुड़ा चढ़े से वाले मामला आ रहा है.
€5,000 इज गुड अमाउंट टू रीड ए थीसिस। अब उस थीसिस को तो मैं रटूंगा भाई, पढ़ूंगा क्या? €5,000 दे रहा है, ये गाड़ी आ जाएगी भाई ना एक थीसिस देखने से, है ना? यू पे बनाना, यू गेट मंकीज। तो थीसिस ₹1,000 में 400-500 रुपए, अरे भाई 400-500 पेज इतना बकवास पढ़ना भी एक बहुत बड़ा जोखिम है, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ आते आते दिमाग गर्म हो जाता है भाई। और फिर उसका सुपरवाइजर फोन, बाहर भाई वो थीसिस बच्चे का, ये हाल बना रखा है। बस थोड़ा सा लिख दिया था कोई यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई और देखेगा तो कहेगा यार ये सब IIM प्रोफेसर भी ऐसे कर रहे हैं यार, क्या भरोसा, के जगह ही नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा ईमानदारी का लिख दिया नीचे, लैंग्वेज इज अ बिट चैलेंज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। In some part of the thesis, language is a bit of challenge. क्या कह सकता हूँ, ग्रामर का माँ बाप बेड़ा गर्क कर रखा है, थोड़ा ही लिख सकता हूँ ग्रामेटिकल एरर से। तो मैंने सोचा ये VC साहब भी तो हमारे जैसे होंगे, उनके पास भी टाइम कहाँ है पढ़ने का तो चैलेंज वैलेंज देख के छोड़ देंगे। However, in the overall analysis of the thesis is recommended for award. और मेरा बदनसीब VC साहब को उसी लाइन पे ध्यान आ गया थीसिस वापस चला गया। मेरा दोस्त जो डीन था या हेड था जिसने भेजा था, फोन करके रात को 12 बजे कश्मीर से चिल्ला रहा है, अरे बार भाई बेड़ा गर्क कर दिया आपने, VC ने वापस कर दी, बच्चे का नौकरी लगने वाला था, ये था, उसकी शादी टूटने वाली, क्या बात। वो कभी थीसिस में शादी की। तो ऐसे कभी कभार प्रिजम्पशन बड़ा गलत निकल जाता है ना। वो VC साहब ने पढ़ लिया लैंग्वेज इज ए चैलेंज, तो उन्होंने वापस कर दी थी, दिस शुड बी रिवाइज्ड एंड VC, लैंग्वेज शुड बी रिवाइज्ड। और फिर बाइंडिंग फाड़ना पड़ रहा है उनको। सो समटाइम यू गिव, सो इज इट गोइंग टू चेंज अस? नो, it will do only 80% of it. It will make a structural thing. But if you are not a good professor of say English literature, gender studies आप करे नहीं है, आप फिल्म स्टडीज के नहीं है, मैं फिल्म स्टडीज का थीसिस देखता हूँ, तो अगर आपने फिल्म नहीं देखा, फिल्म स्टडीज नहीं देखता, अल्लाह में आप बड़े परहेजगार आदमी, सिनेमा उनेमा से कोई मतलब नहीं, तो सिनेमा स्टडीज वाला थीसिस मत देखो ना इमाम साहब, मना कर दो कि अल्लाह के बंदे मुझसे ये गुनाह मत करवा। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ भाई, नमाज वमाज पढ़ता हूँ, क्या बात कर रहा है। इमरान हाशमी से बहुत उम्र में बड़ा हूँ यार, मैं कुछ नहीं देखता। लेकिन वही है, ये लिखे कैसे? दोस्त को कह यार मैं IIM का प्रोफेसर हूँ, या फिल्म स्टडीज का थीसिस मत भेज भाई, अरे बाहर भाई देख दीजिए, क्या बस फुल प्रोफेसर चाहिए, देख IIM के तो जल्दी निकल जाए, बट आई डू फिल्म स्टडीज। तो अगर आपने उसको करा लिया, द रिपोर्ट हैज बीन जनरेटेड बाय एन AI टूल, ChatGPT, और you must have deeper understanding of the subject area, otherwise it will add the sentence, you will not find the mistake. When you read it, it is 80%, you can say, structurized. In the chapter number 3, Dickensian idea of film is contradicted by the scholar in her research comparing with Satyajit Ray's Pather Pachali. अब ये तो AI ने लिख दिया, आपने पथर पचाली देखा नहीं, डिकेंसियन फिल्म थ्योरी आपको याद नहीं है, भूल गए हैं, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। इट मीन्स दैट AI will tell you to read Dickensian theory. Before I send this report, I have to read Dickensian theory, or I remember this, or I have studied पथर पचाली के ऊपर 2-4 पेपर पढ़े। आपको पता है बिधान चंद्र राय ने सोचा था पथर पचाली से PWD का मतलब, तो उन्होंने भेज दिया था फिल्म को। सो इफ यू सी द फिल्म, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय PWD डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बिधान चंद्र राय जैसे बड़े आदमी ने भी तो सोचा होगा पथर पचाली तो ही तो PWD का काम ही होगा। तो इट वॉज फंडेड बाय PWD।
तो अगर आप एआई से काम करते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। एआई विल पॉइंट आउट दैट द बुक्स व्हिच यू हैव नॉट रेड, इट विल रेफर टू दैट। द रिसर्च स्कॉलर राइट्स in third part the Coleridge's idea of poetry, however it is contradicting or it is supporting the modern version of literary criticism as propagated or proposed by XYZ, और पेपर का नाम दिया हुआ है। अब इसमें अंधे की तरह साइन करने से पहले आपको वो पेपर पढ़ना पड़ेगा। You have to do this human work. So AI will help you to make the structure. Fine. तो अभी किसी ने AI से क्या होता है, अब देखिए, ये मेरे ओपन ड्यूरिंग माय डिलीट आई वाज सपोज टू डिलीट के उसमें एक रूल्स में था कि द डिलीट स्कॉलर, बिकॉज डिलीट में आपका सुपरवाइजर नहीं होता, कुछ नहीं होता, you have to write your own thesis in 6 years and submit it. So university put somewhere in the clause, because they are senior 6 years plus लोग ही डिलीट करते हैं, post PhD 6 years experience. तो उसमें एक रूल्स में ये था कि you will devote 200 hours of teaching in the department. तो मुझे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैं गया, वॉलंटियर किया, वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ा, लेकिन मैंने कहा कि साहब ये मेरे उन्होंने लिखा है तो आप बताइए कोई क्लास वास पढ़ाना है, 200 घंटा मैं पढ़ा दूंगा। तो वो बेचारे गुजर गए। तो उन्होंने, अरे इस्लाम साहब क्या पढ़ाएंगे इन गधों को, मैं क्या बात कर रहा भाई, इतना डिस्करेजिंग, मैं जान लगा दूंगा यार, क्या बात कर रहा। मैं आज से 10 साल 20 साल पहले एनसीईआरटी में आई वाज रीडर इन इंग्लिश इन 2002। माय फर्स्ट प्रमोशन वाज इन इंग्लिश डिपार्टमेंट इन एनसीईआरटी। तो मैं जान लगा दूंगा यार, मुझे बहुत याद है अभी भी हमें इंग्लिश वाला कहानी ये है। लिखिए, लीजिए, जान लगाइए, देखिए इस गधे ने क्या लिख रखा। तो आई सो एन असाइनमेंट व्हिच इज वेरी नाइसली ब्रांडेड, स्पाइरल वायरल किया हुआ प्रिंट आउट, उसमें लिखा हुआ है बेकन इज अ टाइप ऑफ ब्रेड मेड इन वेस्टर्न फ्रांस एंड ब्ला 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 ब्ला, पूरा लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ा, मैंने सोचा इन्होंने कोई असाइनमेंट दिया होगा, बंदे ने पूरी बताया प्रोसीजर। तो वो मुस्कुराए, इस्लाम साहब समझ में आया क्या है? बोले नहीं, बच्चे का तो लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है और अच्छा डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज वेरी गुड एंड इट्स अ नाइस कंस्ट्रक्शन। मैंने इस गधे को मैंने कहा था डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश प्रोज। इसने एआई को पूछा बेकन कौन है बे, उसने पूरा बेकन की कहानी बता दी, और फ्रांस में जो बेकन बिकता है, जो फूड आइटम है, उस बेकन को छाप दिया, प्रिंट आउट लेके जमा कर दिया। दैट इज द डेंजर ऑफ एआई। AI can make your life easy, but if you can differentiate between that bacon and Francis Bacon, नहीं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में ब्रेड बनाने की तरीका बता के असाइनमेंट जमा, और वो भी हिम्मत है। देखिए, मतलब कि इस गधे को पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है असाइनमेंट पढ़ने का, जमा कर दिया कि नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, सर के पास टाइम कहा है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मेकिंग आवर लाइफ मोर चैलेंजिंग to use AI, but at the same time, because AI generates your basic structure from various different part of the thing, and it has its own idea of saying. ग्रॉक में आप कल देख रहे हैं ना, ग्रॉक जो रिप्लाई कर रहा है, AI generated रिप्लाई, ग्रॉक कहां से रिप्लाई करता है? ट्विटर में अगर एक मिलियन 2 मिलियन लोग किसी को पप्पू कह दे, तो ग्रॉक कह देगा ये पप्पू है। वही सेफेस्ट नाम अभी इस माहौल में ले सकते हैं, बाकी सारे नाम लेना जान से खतरा हो जाएगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो ग्रॉक को कैसे पता पप्पू कौन है? क्योंकि ट्विटर में इतने पप्पू भरे पड़े हुए किसी को पप्पू बताने में, तो ग्रॉक वहां से लर्न कर रहा है। सो इट इमीडिएटली क्विकली गोज टू द डाटा एंड सी 10 million people are telling one person Pappu, and so he writes in India XYZ is known as, but however this is not correct, this is his political opponent who says this. अब ये देखिए, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बता रहा है
लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इस चीज को करेक्ट नहीं मानते. दिस इज नॉट ए फैक्चुअल थिंग. So you will see every day the Grok reply is becoming more and more human. आज हमारे AI में उसी चीज की जरूरत है कि आप कोई चीज AI से जनरेट करें. आप जैसे ये सारे जो रिसर्च बिट है, स्काइट है, राइटिंग, ग्रामरली, वेरी स्ट्रॉन्ग AI डोमिनेटेड एप्लीकेशंस आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं. कम से कम ग्रामरली के बाद थीसिस में स्पेलिंग मिस्टेक तो पाप ही नहीं है, महापाप है. आज की तारीख में ये कह नहीं सकते कि मैं जुमरीत अलाइया फलाना यूनिवर्सिटी में से PhD कर रहा था, वहां कोई अच्छा टीचर नहीं था, मेरा सुपरवाइजर की स्पेलिंग गड़बड़ कर रहा है, तो उनको भी पता नहीं था. मेरे सुपरवाइजर तो और अच्छे थे, इंग्लिश के प्रोफेसर वाइस चांसलर बने. तो मैंने देखा उस जमाने में वो पूरा चैप्टर को लाल पीला कर देते. एक चैप्टर जमा करो और 10 चैप्टर की हेडेक लेके घर आओ. ये क्या तुमने लिख रहा है? आर्गुमेंट इज नॉट क्लियर. नो नो, डोंट थ्रो अवे स्टेटमेंट लाइक दिस. लाल पीला करके एकदम ऊपर नीचे इतना तीर मार देते थे कि आधा दिन उसी पे रिसर्च करना पड़ता कि तीर कहाँ लगा, साइड में, इधर उधर इधर. अच्छा, वो चले गए. अब वो प्रोफेसर नहीं मिले. मेरे जैसा काम चोर आदमी, ना मेरे पास तीर लगाने का टाइम है, खुद कर ले गए. तो वो करते थे, हाथ से पढ़ते थे, स्पेलिंग मिस्टेक, एक बार लिखा, 2 बार लिखा. तुम्हारा लॉजिकल आर्गुमेंट में गड़बड़ है. बाहर आर्गुमेंट को तुम ये करके ये पैराग्राफ इधर कर दो. वो एक दिन तंग आ करके पहला वाला जो प्रिंट आउट था ना, वही लगा दिया. मैं कहा समय नहीं है. मैं कहा डांटेंगे फिर, तुम लाए नहीं, तुम काम नहीं करते. आई वॉज टीचिंग फुल टाइम दैट टाइम, सो इट वॉज वेरी प्रेशराइजिंग टू डू ए PhD पैरेलल. तो मैंने हड़बड़ी में मैंने कहा क्या करूं. पहला जो प्रिंट आउट सर भूल गए होंगे, उसी को दे देता हूं, फिर लाल पीला कर देंगे, और क्या करेंगे. और मैंने दिया और रिएक्शन सुन. अब देखो तुम काम कर सकते हो, यू आर ब्रिलियंट, आप ठीक बना है. आसामी में बात करते थे, इतना देखिए सर, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ सी द लॉजिकल फ्लो. मेहनत करोगे. अब तुम जो ये जो है ना शॉर्टकट के ढूंढते हो ना बाहर, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता. तो टैलेंटेड बच्चे हो, तुमसे मेरी बड़ी उम्मीद है, इसीलिए तुमको परेशान करता हूं. गधों को छोड़े कर. मैं तो शर्म के मारे धरोनी दीदा हो, सीता मैया की हाल कि धरती फट जाए और मैं घुस जाऊं, पाप लगेगा. एक दिन बोला मैंने, वो रिटायर वगैरह किए. मैंने कहा सर ऐसा ऐसा एक बार होता. अच्छा, तब क्यों नहीं बताया. मैंने बोला तब मुझे थीसिस जमा करना था सर, फिर आप लाल पीला कर देते. So at one point of now our professors are gone. We are our own red green markers. And if we are not intelligent enough, we are facing a biggest problem today. Today when I go to my class, my challenge is not from my colleague who can teach better. My challenge is an American professor who has a free video uploaded and who can teach my students far better than my bakwas. And very soon my student will recognize this. ये साहब ने जो सुबह मार्केटिंग के ऊपर गोलगप्पे खिला के चले गए, ये तो करीबन 20 साल पुराना थ्योरी है. ये तो आउट ऑफ मार्केट हो चुका है. ChatGPT बता रहा है दिस इज एन ओल्ड डेटेड मार्केटिंग थ्योरी. पर 1 घंटा खा गया बंदा सुबह मेरा, और फिर मेरे बाप, ग्रैंडफादर सबको याद करेगा. So why should I take that risk? Talented student. So today when I go to the class, at least I have to say, okay, my communication theory, what is the addition? So you put open ChatGPT or open DeepSeek, you write 3 lines, going to teach Coleridge or going to teach communication strategy in advertising. What are the latest theories? So immediately will give me a list in 5 seconds. Before I reach my class, on the corridor I can read what are the theories. If I see I know 4 and I don't know the 5th one, I know this is my point which I should not touch. I can tell my students that today I will teach 4. There is another new theory which is come, but I will talk about it in next class. I have to prepare it. But if I do not give this, so my biggest challenge is to
fight today's researcher, today's research scholars, teachers, everybody. So we go to various, there are, you share this from the organizers so you can get all those names, you don't have to even write. Fine. So what will be the kind of barriers? What will be your barriers? One is technological barrier. Technology is always intimidating in the sense that just like water, है ना? पहले जब यूपीआई आता था पान वाला भी कैसे, नहीं साहब बाबूजी नहीं, कल मैंने माचिस के लिए 1 रुपया पेटीएम में दिया और अड़ भी गया एयरपोर्ट से निकलते, एक तो 4 घंटे में कोकेन का सप्लाई नहीं है ब्रिमान में, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैंने कहा रोक दम दम, और फिर देखा पॉकेट में, आज भी पॉकेट में 1 पैसा नहीं है, भिखारी और फितरा वाले बड़े परेशान थे, 1 पैसा नहीं है, तो मैं उसको लगाने लगा तो पान वाला मुझे तक खुला नहीं है, मैंने कहा नहीं है मेरे भाई, लेकिन उसने 1 रुपया लिया, बिकॉज दिस इज हिज सर्वाइवल नाउ, नाउ ही कैन नॉट लिव 1 रुपी। जबकि शुरू में क्या हुआ था कि पान वाले जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कम जानते, कम पढ़े लिखे, ये डरते थे, कहां टूंग बजा, पैसा किसके पास चला गया। मुझे 1 साल लगा मेरे धोबी, उसको मैं याद करता हूं, नूर हुसैन साहब, तो मुझे उसका एआई का फाइन भी मैंने भरा, तो नूर हुसैन साहब को मैंने कहा भाई ऐसा नूर हुसैन तुम्हारे लिए 200-300 रुपए कहां से मैं लाऊं, लॉन्ड्री पिकअप करते वक्त कैश चाहिए, तो नूर हुसैन ने वो बनाया क्यूआर, लेकिन फिर भी गधे ने अपने बेटे के नाम पे बनाया कि नहीं ये कर दी ना तूने गलत वाली बात, अब पैसा तो तेरे बेटे के अकाउंट में जाएगा। कहता है साहब मुझे नहीं मालूम, मैनेजर को कहा बेटे वाला ही ऐड कर दो, मैंने कहा बेटा आप बहू साड़ी पहनेगी, तेरी बीवी नहीं, पैसा तो मैं डालूंगा बेटे की उसमें। So people still trust his son, the blood, in terms of money. But this has changed, has come. एटीएम में पुराने हमारे नया नया एटीएम सिलचर हमारे छोटे से शहर में खुला था, तो अक्सर मैं एटीएम में जाता उस जमाने में, तो पेंशन वाले सीनियर लोग मिल जाते, बेटा 200 रुपए निकाल के देना, पिन भी बता रहे, सब कुछ बता रहे। दैट इज रेजिस्टेंस नॉर्मल, लेकिन उसको जीतना पड़ेगा। जब तक उस टीवी के रिमोट को आप दूर से देखोगे, उस बुकलेट को पढ़ने की जहमत नहीं उठाओगे, तो न्यूज देखने के लिए भी बिटिया की जरूरत पड़ेगी। बिटिया जरा एनडीटीवी लगा देना, तो पता नहीं कितने नंबर में आता है। So at one point of time, people are worried about accuracy. You have to check accuracy more, because something can be repeated 100 times. आपने सोचा होगा झूठ 100 times बोलो सच हो जाता है। AI also recognizes things by user. So if 100 people says Mr. X is Pappu, it will tell you like Pappu. But now it is having a kind of double layer criticism. So people, now it is generating content where the contradictory, आज 1-2 दिन में आप देख लीजिए दुनिया भर के व्हाट्सएप गुरु सब छाए हुए हैं ट्विटर में, तो वो कोई भी कुछ बताते, लोग ड्रोक को पूछ रहे हैं इज इट ए फैक्ट। पहले कोई भी कुछ चिपका देता था, फिल्म का सीन के नीचे लिख रहा है कुछ और, असम के गांव में लोग छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिल्म है बांग्लादेश का या किसी चाइना का, पता नहीं कहां का, उसको पता ही नहीं है चाइना मणिपुर अलग जगह है भाई, आंखें छोटी है तो चिपका देगा कहीं भी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मणिपुर के गांव से लोग भाग रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैच करता है। इट सीम्स दैट द पिक्चर इज टेकन फ्रॉम ए चाइनीज फिल्म मेड इन 1981 विद इन सेकेंड्स, और क्योंकि यूजर लोग होशियार हो गए, तो ट्विटर में जैसे किसी ने पोस्ट किया, आजकल कोई ना कोई बंदा नीचे ग्रोक इज दिस करेक्ट, और ग्रोक बता दे रहा है। सो वी हैव कंसर्न, एथिकल कंसर्न, जो बायस ऑथरशिप, ये सब। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग, बिकॉज वी आर नॉट रिप्लाइंग समबडी इन ट्विटर। वहां तो रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा ना एमएलए आईपीएस स्टाइल में, बता दो कि यार तुम झूठ मत फैलाओ, ग्रोक्स बाबा ने बता दिया है कि चाइनीज फिल्म का टुकड़ा है, कोई मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन थीसिस में तो नहीं लिख सकते, देयर यू हैव नीड रेफरेंस।
And when the reference is concerned, then we have to go to the original, create our original content. It can be helped by AI, which is many journals are now accepting that you will mention in your paper that I have taken XYZ AI tools help in drafting this paper. Honestly, you can write it and it can get published in a very good journal also. But double challenge is that from there you have taken the help, but everything written in the paper you have re-verified or created from your own work. So if I have to write, for example, a paragraph on, for a very simple thing like, wow, very simple thing, if I have to write like, for example, Mahatma Gandhi is called the father of the nation. Now, if I have to write it in a research paper, the first question comes to mind: who said it, when, where, how? In which book it was mentioned first? Where it can be authentic? And second thing, because we are researcher, we ask, ये मदर क्यों नहीं है, महात्मा गांधी ही क्यों है, और उन्होंने ज्योतिबा फुले को कहा था फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी ने किसी और को कहा था, तो उसका रेफरेंस आएगा, most probably Phule. So you see, the artificial intelligence will tell me, without artificial intelligence, what I do to write a paragraph on this with reference, what I do. इतिहास डिपार्टमेंट में जाकर सर को कहें, सर गांधी जी के ऊपर कोई किताब है सर, ये पेपर लिखना था सर, कुछ रेफरेंस मिल जाता तो. यस, यही से तो हमारा मैनुअल रिसर्च शुरू हुआ है ना. नाउ इट हैज बिकम वेरी सिस्टमेटिक. यू जस्ट राइट हु सेड, to justify, you go to any of the tools, ChatGPT or DeepSeek, write that, give me supporting reference for the statement Mahatma Gandhi is father of the nation. अच्छा, इसमें इंटरनेट नहीं है बॉस, तो ये जो मुंह में है इस मोबाइल में इसमें है, थोड़ा सा लगा दो तो इसको दिखा के मैं कंक्लूड कर लूंगा कि what is the additional work you have to do an AI to avoid this 30% ethical concern. 30% of 7 of the people today are worried about the ethical use of AI in research. তাহলে আর কি হলো, শো করবে না, প্যারালাল না প্যারালাল করে দাও না, এটা এক্সটেন্ডেড করে দাও বা প্যারালাল করে দাও. আচ্ছা, ঠিক আছে. So I can just verbally tell you. So when you go open the DeepSeek, you write this, give me references, give me 5 references, give me 3 major references, give me 20 references. You ask as per your need. References in support of the statement Mahatma Gandhi is father of the nation. So your whole journey of asking, going to the history department, to the library is over. It will immediately list 5 or 6 or 7, as much as you want, references to articles and papers where this statement is mentioned. So AI has removed 80% of your hard work, but still 20% of hard work remaining. What is this? If it has referred, not blindly to start writing, as per Jonathan Coman 2019, it may not. You have to cross-check. You have to open that paper. You have to see whether that is the honesty which is now we have to do. 80% hard work. Imagine to read those, first you don't know where it was mentioned. And even if you know, your library does not have it. Today you have all the references quickly. You have online libraries, you have access. If it has listed 25 papers, you ask for 25 references
And then you see which one you can access free of cost download, which one is available in your library subscription, which one you can available in Delnet and other online libraries which you can access, but that hard work. Now, only 22% of universities still now have AI policies. Very soon you will have an AI policy of Aliah University also. It is just round the corner. It is by default. आज कोई अकाउंट नहीं खोल सकता कहने साहब एटीएम मत दीजिए मुझे मेरा डर लगता है कह ही नहीं सकता लिफाफे में डाल के आपके घर में भेज ही देगा चाहो ना चाहो मेरे बेटे के नाम पे पैसा रख दिया था क्लास 5 में जब पढ़ रहा था वो एक दिन बड़ा दुखी मन मैंने बेटा तेरे क्या नहीं मोदी जी बहुत बुरे मैंने अरे बेटा मत बोल पुलिस पकड़ लेगा क्या बोल रहा है मोदी जी से क्या तकलीफ है भाई तुझे they बोले नहीं वो दीदी का my elder daughter you know the first one is a daughter so जैसे वो साहिबा का सुकन्या समृद्धि है मोदी जी ने हमारे लिए कोई अकाउंट बनाया नहीं उसके पैसे बढ़ते जा रहा है मैं कंगाल हूं तो मैंने उसका मन रखने के लिए कि बेटा नहीं तेरा लिए भी एक कर लेता हूं अकाउंट खोल दिया 3 लाख मुसीबत हो गई भाई वो बैंक वाले उस 5वीं के बच्चे से पूछ के एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान आया एक्सक्यूज मी नमस्कार एक दिन देखा मेरा बेटा बात कर रहा है मैंने कहा किससे बात कर रहा है भाई कि नहीं पापा इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी बता रहा है तुझे कौन बता रहा है उन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो अकाउंट में पैसा है ये देख लिया उसका उम्र क्या है पूछा so they are calling him just like a customer and offering him loan and he is listening जी मैडम स्कूल की मैडम की तरह रिप्लाई कर रहा है so artificial intelligence is making that call but know that he is 5 years old don't make that call if it's listed 5 references don't blindly add them to your paper you have to go to them but hard work is half done earlier you have to read 25 pages and then find out today the same paper you can attach to the AI platform advanced platform or simple platform these like DeepSeek ChatGPT are very simple platform to start you can ask anything fine and if you do the research after 1 month you will immediately find out what are the same DeepSeek or ChatGPT you ask I am a language researcher what kind of AI tools I can use immediately it will give you the list get a printout next month you start trying all those apps most of the app will give you some liberty to work on it free of cost and if you reach an advanced level if you want to have a paid version larger research then obviously it is a technology resource it needs money maybe your university will subscribe it my institute subscribe to most of the AI tools and it will give it to the research scholar or you invest and do that but the first thing first as I said change your habit get your reward in next 20 years if you have to survive you have to have upskill and one skill is needed just like 10 years ago we said even for any job we write computer skill is necessary you seen the advertisement very soon they will write assistant professor in history AI tools expertise desirable कुछ तो मंत्री जी के भतीजे ने किया हुआ है इसीलिए वो भी स्पेशलाइजेशन डाल दिया वो एक अलग कहानी है क्योंकि उसी को ही लेना है लेकिन इससे पहले कि वो आ जाए स्पेशलाइजेशन लेके आपको वो स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा एंड नोबडी इज एक्सक्लूडेड कि मैं तो इस्लामिक स्टडीज का हूं इससे क्या मतलब अल्लाह मियाँ जाने कुछ ही दिनों के मेहमान हैं क्या रखा वो गायत्री मंत्र मुझे मत सुनाइए तो सारा चीज एकदम बट्टा बैठ जाता है ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमें वही लौटना है तो पीएचडी क्यों किया रे भाई ऐसे ही लौट जाता बगैर पीएचडी के मर नहीं सकता क्या तो गायत्री मंत्र और इन्ना लिल्लाहि अपने तरफ जीना है एज ए गुड रिसर्चर 20 ईयर मरने से पहले तक तो एआई को तो करना पड़ेगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ये मैंने
सी यहाँ मैंने डाल दिया है, इसको आप लोग सर्कुलेट कर लीजिए। ये लिटरेचर रिव्यू के टूल्स के लिस्ट दिए हुए, सेमेंटिक स्कॉलर्स, इलिसिट, कनेक्टेड पेपर्स, चैट जीपीटी, डीपसीक, प्लॉट, ये सारे चीज यू हैव टू गो टू दोज एंड ट्राई योरसेल्फ। Collect this from your conference organizers for data collection and analysis. These tools are there. These are specialized tools. Start with DeepSeek. Next month, you start with any one of them to try how it works. Fine. And then for writing, it is a criminal offense to write bad language nowadays, because you have grammar, you have plagiarism checker, you have citation management, you have automated drafting software, You can do the drafting, I said earlier, scholarship application. For experimentation and simulation, these are some of the basic list I have given within the PPT. You try one after another. Thank you very much. Okay, so I believe a lot of you will have questions. So we will start with Sir. You had a phone call from somewhere. কয়টার সময়? জুম্মা কয়টার সময়? একটা। So we will start with Sir. Not exactly question. Actually, I want to express my happiness. Probably many of you may not know that my association with Professor Islam is from 1987. Yes. So it is like roughly half century, very close to half century. কিন্তু তার থেকে বড় ব্যাপার যেটা আমি শেয়ার করতে চাইছি, আমাকে খুব ভালো লাগছে শেয়ার করতে। প্রফেসর ইসলাম যাকে আমরা বলছি, আমরা ফন্ডলি বলতাম বাহারুল ভাই বা বাহারুল ইসলাম, সরি বাহারুল দা। কেন? এমএ আমাদের সময় হি ওয়াজ ভেরি পপুলার, মানে আইকন বললে হতে পারে, হিরো বলা যায়। उसके बाद भी अरेंज না না স্যার, আমাকে ওইটুকু বলতে দেয়, এক দুটো সেন্টেন্স আমি বলতে চাই। পপুলারিটি का कोई फायदा ही नहीं। ওই সময়ে সারা ভারতে দুজন বিখ্যাত কুইজ মাস্টার ছিলেন, সিদ্ধার্থ বোস এন্ড প্রণয় রয়। উই ওয়ার রিয়েলি লাইক ইউজ টু লাইক দেম। আর এমএ কিন্তু সিদ্ধার্থ বোস মানে হচ্ছে যাকে আপনারা দেখছেন। তো আমার খুব ভালো লাগছে। আর হ্যাঁ, সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্স বলা দরকার। 92 এর পরে আর দেখা হয়নি, যখন আজকে দেখা হলো এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে, he didn't take even 1 minute to recognize and recollect all those old stories. তো সেই জন্য আমার মনে হলো যে আমি একটু শেয়ার করি। I am really happy, extremely happy that you have come here. And I never, after 1992, I never listened you. I listened today, and I really thoroughly enjoyed your lecture. After many days, I really listened a very good lecture. একটা প্রশ্ন আমার, মানে আপনাকে করা, যাকে করাই হতে পারে, মানে আপনার মতো জায়গাতে যারা আছে, very I mean few days back I was evaluating a thesis from my I mean that thesis is not from West Bengal. ঘটনাচক্রে তার রিসার্চ সুপারভাইজার known to me, তিনি আমার সিনিয়র। তো সিনিয়র হওয়ার জন্য হয় কি কিছু লিমিটেশন থাকে, কিছু মানে খুব হার্শ কিছু করা যায় না, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। So he was contacting me again and again, what you were revealing, calling up and all. আমি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে রিসার্চার ওয়াজ নট অ্যাট অল সিনসিয়ার ইন হার রাইটিং। এমনকি মানে পেটি ফর্মুলা সেটাও ভুলভাল লিখেছে। অ্যান্ড দেন she has referenced a paper whom also I know very well, and I told her, Didi, এই রেফারেন্সটা কিন্তু ঠিক নেই, আপনি বলছেন ঠিক আছে, বাট ইট ইজ নট কারেক্ট, বাট সি ইজ ইনসিস্টিং। এবারে ওই রেফারেন্সটা তো ঠিক নেই। দেন আই ডাউনলোডেড দ্য পেপার অ্যান্ড সেন্ড টু হার, লুক ইয়োরসেলফ, দিস রেফারেন্স ইজ নট কারেক্ট। দেন সি টুক এ photocopy of a book, Bengali book, I am not telling the name, and sent to me. এবং বিশ্বাস করুন বইটা আদ্যপান্ত ভুলে ভরা। এবার বললাম, দিদি আপনি যদি এরকম 5000টা বই আমাকে পাঠান, দেন অলসো আই এম নট কনভিন্সড, বিকজ দিস ইজ দ্য বেসিক থিং, বেসিক আইডিয়া ইফ ইউ হ্যাভ, দেন ইট শুড নট বি। এই যে প্রবলেমটা হচ্ছে, এবার আমি রিপোর্টে লিখবো কি, মানে আমার সিনিয়র, আই রেসপেক্ট হার, আই ক্যান নট আউটরাইটলি ডিনাই। এইটাই হচ্ছে আমার মনে হয় ধর্ম সংকটে পড়া, যেটা আপনি বললেন। এরকম জায়গাতে আমরা অনেক সময় ধর্ম সংকটে পড়ে যাই।
আমি জানি না আপনি আমাকে এনলাইট করতে পারবেন কিনা এই ব্যাপারে যে এই রকম পরিস্থিতিগুলো কি করব, মানে হাউ লং। Very soon we'll do. Right now you are seeing targeting. Assignment cannot be. We cannot have assignment submitted at after a threshold. My assignment cannot come to me. It will not be submitted even online because it will check the Turnitin automatically. So if you have plagiarized, you cannot even touch submit button. That is one. Number two, because AI we are using, it will be, that's what I say, it will not make life easier. Many people have a false idea, क्योंकि वो petition अच्छा लिख देता है, write an introduction on रविंद्रनाथ टैगोर, टा करके एकदम 3 पैराग्राफ नाइस बना के दे देता है, तो खुशी हो जाती है कि बड़ी जिंदगी आसान हो गई, जिंदगी परेशान हो गई। उसने कहाँ से टैगोर के ऊपर से बात आई, उसके साइटेशन आप कहाँ से निकालें? So at one point of time, very soon the thesis will go through that process. That the referencing, which sir is saying, very soon we will say thesis checker, citation marker, citation tester. लोग बैठे हुए ना भाई खाली, इतने लोग आईटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपको 12वीं पास बच्चा एप्लीकेशन बना रहा है। And very soon we will see that just like Turnitin, we have a citation checker also. So it will not come to my table and I will not be in a dharma sankat because my friend cannot submit his thesis without getting through that. So that is very soon come. Because some of the things which can be checked by mechanically. For example, earlier what we used to do, we have to check all the papers and we have to write page number, grammatical mistake in page number 15, line number 13. Nowadays, this is all will be done by the AI checker. So you don't need a professor to do it. It is a machine thing which can be done. So very soon we will face this. So better we prepare ourselves. So if anybody has any questions? Yes? Anybody? সময় কম আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। So everybody can collect the email ID and the mobile number. Those who are specifically interested subject-wise, you can arrange a smaller Zoom group and take some time. In the evening is better, I have no office. So that time we can have a Zoom call. Those demo which I could not do it here because of the connectivity, that you can do it Zoom. I can actually do the workshop with you like 1 hour. But first thing is that obviously only those who are really interested. Arrange yourself, take my time, will come to this. I have Zoom license. Done? Thank you so much, sir, for the interesting session. We are all grateful for your presence. So we will be having the namaz break and lunch break, and then we will resume afterwards.